बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं म्यूट हूँ, ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ रही है आवाज़ मेरी अपना? ठीक है, उस वक्त जी मैं म्यूट था उस वक्त ना। चलें जी, स्टार्ट करें। टॉपिक लिखेंगे, ऊपर मेन लिखें शिरक, और क्वेश्चन लिखें डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिरक। 10 मार्क्स के लिए। और ये चंद साल पहले जो है ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपकी बुक में जो है वो सिर्फ 4 मार्क्स के हवाले से तो है, 10 का नहीं। जी हम लोग स्टार्ट करेंगे। द बिलीफ इन तौहीद is the first fundamental and foremost belief of Islam, and is called the first articles of faith. Shirk or the idea of anyone sharing the authority of Allah is a later is a later बाद की later development अब हम न्यू पैराग्राफ बनाएंगे। शिर्क लिटरली मीन्स न्यू पैराग्राफ बनाए। शेयरिंग, शेयर करना, शेयरिंग और पार्टनरशिप while in Islamic terminology shirk means to believe and accept someone as the sharer and partner of Allah in his person, attributes,
an entity. अब न्यू पैराग्राफ बनाएंगे. The first human being on earth Hazrat Adam the first prophet of Allah believed in the unity and oneness of Allah as the human population increased and scattered, the people forgot the teachings of Hazrat Adam alayhi salam and started believing and worshipping many gods instead of Allah. They considering, बल्कि they considered करें, they considered all horrible and powerful objects as gods and started idolizing, IDOLIZING, idolizing them. Similarly, they also started worshipping useful Worshipping useful and beneficial things अब न्यू पैराग्राफ बना लेंगे. The scholar has divided the shirk into three main types.
अभी हम पॉइंट बना रहे हैं, पहला पॉइंट बना लें ताकि याद करने में आसानी होगी। पहला पॉइंट बनाएं, शिर्क इन द एंटिटी ऑफ अल्लाह। It means to believe in the existence of someone equal to Allah or having some physical or family relation to him, H capital. One form of this belief is to accept someone as equal to Allah and the second form is to consider Allah as the offspring of someone or to consider someone as the offspring। ईमान एक पेज छोड़ दीजिएगा पूरा। और someone ठीक है सर। as the offspring of Allah। In short, belief in the existence of two or more gods सर ये सेकंड पॉइंट नहीं उसी पे चल रहा है। more gods is shirk। Similarly, to consider someone as the son or daughter of Allah is also shirk। It is rejected by Surah Ikhlas।
comma start. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, He is Allah the One, Allah is eternal and absolute, no one is born of Him, nor is He born, and there is none co-equal and comparable unto Him. Comma close. अब सेकंड पॉइंट बनाएं जी. एक मिनट जरा माइक पर इधर पड़ा. अच्छा, एक मिनट में फराज है, शायद कुछ लेने के लिए गई, तो एक मिनट तक वेट कर लेते हैं, उसको तक फिर हम लोग कर लें. ईमान कैसे चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट बाकी जो हैं तीनों सब्जेक्ट? सर वो अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं, आपकी आवाज़ सर अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं. सर अच्छे जा रहे हैं जी अच्छा सर। अच्छा, चलें, गुड, अच्छी बात है. बस अब चूँकि टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है और जी सर। प्रॉपर तरीके से अब तैयारी करते जाएं, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आगे आप लोगों के पास जी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो काफ़ी इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे. इसलिए अभी से जो है जी ना सर। तैयारी को उसको साथ साथ करते जाएं. जी, चले सेकंड पॉइंट लिखिएगा. शिर्क इन दी characteristics of Allah. ये सेकंड पॉइंट है. इट मीन्स that someone believe It means that it means that someone believe that the characteristics of Allah are possessed by someone else, or to consider that someone else possesses the same knowledge, power, and will similar to Allah.
The Holy Quran again rejects this belief in the following words. कॉमा स्टार्ट करेंगे. There is nothing like him, comma close. तीसरा पॉइंट बनाए. Shirk in the demands of the characteristics जी इसमें लिखेंगे. जी तीसरा पॉइंट है. जी तीसरा पॉइंट है. ये तीसरी टाइप जो उसकी है ना, थर्ड टाइप. Shirk in the demands of the characteristics. Allah possesses great qualities which demand that only Allah is worthy of worship and obedience. Only Allah should be the center of our love, hope, and fear. It should be a faith that Allah is the creator, provider, fashioner, and sovereign. Therefore, do not bow, Therefore, do not bow heads in front of powerful or lifeless things. The Holy Quran itself commands, comma start, and your Lord
has commanded that you should worship none but him alone. Comma close. लास्ट पैराग्राफ बनाइएगा. शिर्क affects human life. ह्यूमन लाइफ. हाँ जी, इंसानी जिंदगी को अफेक्ट करती है बैडली. Man remains no supreme creature only because of it. सर लाइन प्लीज वापस रिपीट करिएगा. जी, शिर्क affects human life badly. Man remains no supreme creature only because of it. It also deprive him from self-respect and make him arrogant and proud. As he considered that all of his success is due to his effort. It also makes him narrow-minded and cowardice. COWARDICE, as he has the fear of everything in his heart. He lose his heart. He He lose his heart on every failure and becomes pessimistic. Optimistic नहीं बल्कि इसका opposite pessimistic.
and his abode will be in hell forever. And his Abode, ABOD, abode will be in hell forever. اچھا ایسے ہے کہ اس کا ایک پارٹ بھی لکھ لیں. اچھا ایک اور بھی کر لیں چونکہ ایک ہم سینگ لے کے آنے تھے. It is also considered unforgivable and the greatest sin as Quran says, verily shirk is the highest wrong deed. یا wrong sin بھی کیسے wrong deed کہہ لیں کاما کلوز. آج اس کا پارٹ بھی لکھیے گا. What are the disadvantages of shirk? یعنی اس قسم کا کوئی بھی پارٹ بھی جس میں شرک کی ڈس ایڈوانٹیجز، ان کے نقصانات یا کوئی اور ورڈنگ یوز کی جائے. تو یہ جو لاسٹ پیراگراف ہم نے بنایا ہے نا کہ شرک جو ہے افیکٹس کرتا ہے بیڈلی والا، یہ جو پیراگراف ہے یہ اس کا پارٹ بی کا آنسر بنا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ والا کوشچن جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر اس میں ڈال دیتا ہوں وہ گروپ اس کے اندر جو ہے یوٹیوب میں، تاکہ ایمان اس کو پھر کمپلیٹ کر لے گی، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ایک پورا پیج رہ گیا تھا. ایمان ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو جی میں ڈالتا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. بلکہ وہ آہستہ آہستہ میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو نا کریکشن کرتے رہ کیجیے گا. اور ایک اپنی روٹین بنا لیں آج سے نا کہ رات کو سوتے وقت جو نا جو لاسٹ ٹائم ہے تو ایک لیکچر کو جو ہے وہ ضرور سن لیا کریں. اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا چونکہ آپ آلریڈی لکھ تو چکے ہیں، سننے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ تیاری ہوتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے.